The integrated process skills. The term integrated means having more than one components or parts. इंटीग्रेटेड का क्या मतलब है कि जो कि दो या दो से ज़्यादा कंपोनेंट्स हिस्सों से बनी हो, विच आर इंटरलेटेड इन सम वे, जो कि किसी भी तरह एक दूसरे के साथ जिनका ताल्लुक हो. The integrated skills are the skills which require application of basic science skills. इंटीग्रेटेड स्किल्स वो स्किल्स हैं विच रिक्वायर एप्लीकेशन, जिनको एप्लीकेशंस की ज़रूरत होती है बेसिक साइंस स्किल्स की. इट इज़ देयरफॉर इम्पोर्टेंट, ये अहम है, दैट द लर्नर डेवलप प्रोफिशिएंसी इन द यूज़ ऑफ बेसिक साइंस स्किल्स प्रायर टू यूज़ integrated process skills. The integrated process skills include the following skills. Number 1, formulating hypotheses, identifying variables, defining variables operationally, describing relationships between variables, designing investigations, experimenting, acquiring data, organization of data in tables and graphs, organizing investigation and their data, understanding cause and effect relationship, formulating models. The integrated process skills. Formulating hypotheses, stating the proposed solutions or expected outcomes for experiment. These proposed solutions to a problem must be testable. Hypothesis में क्या होता है कि हम किसी भी सॉल्यूशंस का कोई भी सॉल्यूशन जो है वो हम प्रपोज करते हैं, और एक्सपेक्टेड आउटकम्स फॉर एक्सपेरिमेंट, या फिर ये किसी भी तजर्बे की आउटकम होती है जिसकी हम तवक्को कर रहे होते हैं. द प्रपोज सॉल्यूशंस टू बी ए प्रॉब्लम मस्ट बी टेस्टेबल. जो हमारे पास प्रपोज सॉल्यूशन है उसको प्रॉब्लम्स के मुताबिक हमने टेस्ट करना. आइडेंटिफाइंग ऑफ वेरिएबल्स, हमने वेरिएबल्स को आइडेंटिफाई करना है, उसकी शनाख्त करनी है. स्टेटिंग द चेंजेबल फैक्टर्स दैट कैन इफेक्ट एन एक्सपेरिमेंट. It is important to change only the variable being tested and keep the result constant. The one being manipulated is the independent variable. The one being measured to determine its response is dependent variable. दो तरह के वेरिएबल है, एक डिपेंडेंट वेरिएबल है, दूसरा जो है वो इंडिपेंडेंट वेरिएबल है. The one being manipulated, जिसको हम मैनिपुलेट कर रहे हैं वो इंडिपेंडेंट वेरिएबल है, और दूसरा जिसको हम मेजर कर रहे हैं रिस्पांस के तौर पे वो डिपेंडेंट वेरिएबल होगा. एंड ऑल द वेरिएबल्स दैट डू नॉट चेंज एंड मे बी पोटेंशियल इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स आर कांस्टेंट. और वो तमाम वेरिएबल्स जो तब्दील नहीं होते वो क्या होंगे, कांस्टेंट वेरिएबल्स. डिफाइनिंग वेरिएबल्स operationally, explaining how to measure a variable in an experiment, describing relationships between variables, explain relationships between variables in an experiment, such as between the independent and dependent variable plus the standard of comparison. Designing investigations, designing an experiment by identifying materials and describing appropriate steps in a procedure to test a hypothesis. Experimenting, carrying out an experiment by carefully following directions of the procedure so the results can be verified by repeating the procedure several times. Acquiring data, collecting qualitative and quantitative data as observations and measurement. हमने क्वालिटेटिव और क्वांटिटेटिव डेटा कलेक्ट करना है ऑब्जर्वेशंस और मेजरमेंट के थ्रू, मुशाहदात और तमाशों से. ऑर्गेनाइजिंग डेटा इन टेबल्स एंड ग्राफ्स, ऑर्गेनाइज करना है, तरतीब करना है डेटा को
टेबल्स और ग्राफ की सूरत में मेकिंग डेटा टेबल्स एंड ग्राफ्स फॉर डेटा कलेक्टेड, एनालाइजिंग इन्वेस्टिगेशन एंड देयर डेटा, इन्वेस्टिगेशंस करनी है एंड तज्जिया करना है हमने डेटा का, इंटरप्रेटिंग डेटा स्टेटिस्टिकली, आइडेंटिफाइंग ह्यूमन मिस्टेक्स एंड एक्सपेरिमेंटल एरर्स, evaluating the hypothesis, formulating conclusions, and recommending further testing where necessary. Understanding cause and effect relationship. What caused what to happen and why. Formulating models, recognizing pattern in data, and making comparison to familiar objects or ideas. Science process skills and integrated skills and overview. Process of science observing competency indicators. Observe objects or events in a variety of ways using one or more of the senses. Identify properties of an object, shape, color, size, and texture. Use indirect methods, hand lenses, microscopes, thermometers to observe objects and events. Observe objects or events by counting, comparing, estimating, and measuring. Classifying. Identify properties useful for classifying objects. Group objects by their properties or similarities and differences. Construct and use classification system. Inferring. Suggest explanations for events based on observation. Distinguish between an observation and inference. Predicting. Forecast a future event based on prior experience, observations, inference, and experiments. Measuring. Compare and order objects by length, area, weight, वॉल्यूम. इसमें हमने मवाजना करना है और तरतीब देनी है मुख्तलिफ अशिया की लेंथ के लिहाज से, लंबाई के लिहाज से, रकबे के लिहाज से, वज़न के लिहाज से और वॉल्यूम के लिहाज से. Measure properties of objects or events by using standardized units of measure. Measure volume, mass, weight, temperature, area, length, and time using appropriate units and appropriate measuring instrument. Communicating. Construct and use written reports, drawing, diagrams, graphs or charts to transmit information learned from science experiments. Verbally ask questions about, discuss, explain, or expert observation after an investigation. Report the question tested, the experimental design used, results and conclusions drawn using tables and graphs where appropriate. Using space-time relation. Describe an object position. किसी भी ऑब्जेक्ट की जो पोजीशन है, हालत है, उसको बयान किया जाता है. अबव है, ऊपर है, बिलो नीचे, बिसाइड्स या साथ है, इन रिलेशन टू अदर ऑब्जेक्ट्स, किसी भी दूसरे ऑब्जेक्ट्स के साथ ताल्लुक के लिहाज से. डिस्क्राइब द मोशन, डायरेक्शन and arrangement, symmetry and shape of an object compared to another object. Defining operationally. Competency indicators. State definition of objects or events in terms of what the object is doing. इसमें definitions की जाती है ऑब्जेक्ट्स की या फिर इवेंट्स की जो कि ऑब्जेक्ट के साथ वक़ूफ़ पज़ीर हो रहे होते हैं, और व्हाट आर अकरिंग इन दी इवेंट्स, और इवेंट्स में क्या चीज़ अकरिंग हो रही है. स्टेट डेफिनेशंस ऑफ द ऑब्जेक्ट्स इवेंट्स बेस्ड ऑन observable characteristics. Formulating hypotheses. Identify questions or state which can and cannot be tested. Design statement. Questions in inference, predictions which can be tested by an experiment. Experimenting.
design an investigation to test a hypothesis, conduct simple experiments, recognize limitations of methods and tools used in experiments, experimental error, utilize safe procedures while conducting investigations, recognizing variables, identify the manipulated independent variables, responding dependent variable and variable held constant in an experiment, control the variables in an investigation. Interpreting data, formulating models, organize and state in his terms on words information derived from a science investigation, revise interpretation of data based on new information or revised data. Formulating models, create a mental, physical, or mental verbal representation of an idea, object, or event. Use models to describe and explain interpretation of ideas, objects, or